अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ZABFM डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम है द एम्बेसडर और आज के एलुमनाई हमारे जी हाँ, बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है और माशाल्लाह उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं और सीजीपीए से लेके अपने करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रखी है उन्होंने और हमारी दुआएं कि अल्लाह उनको और इज़्ज़तों से और भी बहुत सारी तरक्कियों से, कामरानियों से नवाज़े। हमारे साथ हैं मरियम इमाम। अस्सलाम वालेकुम मरियम। Walaikum Assalam. Thank you so much for such a warm welcome. And I am glad to be back in ZABIST. I mean, any day मुझे बुलाया जाए मैं आ जाऊँ. I really miss being in ZABIST, मतलब honestly. मैं ये कहूँ कि फ्यूचर में कहीं न कहीं मरियम टीचर बनना चाहेंगी। बिल्कुल. That is, I think, my next goal, and it's somewhere into process. Like I am considering that. It's just कि मुझे थोड़ा बहुत उसको देखना है with my professional career and my job. How well I can manage, if I can do it or not. But I am really sure that I can do it. So let's see, maybe not. अच्छा मरियम, हम इस शो में एक चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, इवन हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग किस तरह की हुई? किस तरह के आप स्टूडेंट थे? बहुत ही नॉटी, नोटोरियस या बहुत ही पढ़ाकू या वो कहते हैं ना बिल्कुल मायूस से मगर वो बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाले स्टूडेंट, किस तरह के स्टूडेंट रहे और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई? ओके सो मैं हबीब गर्ल्स स्कूल गई थी. वो अपने ज़माने का बहुत ही एक मशहूर स्कूल था बिकॉज इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आई वुड से कंसिडर्ड. आई स्टिल डोंट रिग्रेट कि मैंने गर्ल्स स्कूल में पढ़ा इवन दो हबीब गर्ल्स एंड 10 years ऑफ माई स्कूलिंग वाज ऑल गर्ल्स. अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि ओ को में पढ़ना चाहिए था बिकॉज you know how to deal with boys since childhood, and there's this comfort level जो आपके पास एक build हो जाता है if you only study in all girls. मगर I think today, if I look back 10-12 years down, I think it has helped me a lot. Those 10 years were very comfortable for me indeed. बहुत सारी situations ऐसी थी where we did not have to worry about कि we're here. There was a lot of strictness in my school in terms of general health care or even for social concerns, for example, of applying mehendi or any jewelry or anything. And today when I see a lot of schools and a lot of millennials, or you can say a lot of Gen Z basically, and the school rules and regulations, I do not see anywhere, and I think that is very important because that is वो time होता है जब आप अपनी base बनाते हैं. वो time होता है when this strength is really important for you. Everybody, every single child, be it anybody from any background they're coming, I think that's very important. So I don't regret. I still love my school as much as I did when I was in school. Well, to be very honest, जब आप किसी educational institute में पढ़ते हैं, be it your school, college or university, when you are in that phase, you will never like it. जब हम स्कूल में थे हमें स्कूल नहीं पसंद था, हमें टीचर्स नहीं पसंद थे. जब हम कॉलेज गए तब हमें अपना स्कूल बहुत अच्छा लग रहा था, वो लाइफ बहुत याद आती थी, और हमें अपना कॉलेज बहुत बुरा लगता था. हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स बुरे लगते थे, लोग बुरे लगते थे, टीचर्स बहुत बुरे लगते थे. व्हेन वी केम टू यूनिवर्सिटी वी यूज्ड टू मिस आवर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ कि ओ स्कूल तो बहुत ही आसान था, चलो कॉलेज भी बहुत ही आसान थे, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, थीसिस, टीचर्स, डेडलाइंस, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. But literally I would say when you leave your university life, or in short when you leave your educational life and you actually step into the practical world, आपने 15 साल एजुकेशन की होती है, आपने 10 साल स्कूलिंग के उसमें ओ लेवल्स ए लेवल्स लगा लें या फिर इंटरमीडिएट लगा लें, एंड देन 4 years ऑफ योर बेसिक डिग्री, बी इट योर इंजीनियरिंग डिग्री, योर डॉक्टर MBBS डिग्री और योर बिजनेस BBA डिग्री, एनीथिंग. व्हेन यू एक्चुअली स्टेप इनटू द वर्ल्ड, आई किड यू नॉट, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, वी आर नॉट टॉट कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्या होती है. हमने जो पढ़ाई की है वो सिर्फ इसलिए किया बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड. वी वांट टू just apply in those skills and move up the ladder, that's it. लेकिन how to deal with the practical world, you're never taught. You're just taught to be confident,
on your own skills. You're taught to be confident with what you're doing, with what you're saying, and with what you have learned. That's about it. So I think I am still very much satisfied with my school, and yeah, it was one of the best schools and my best teachers. अच्छा, No मेरे problem. बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं लाइफ के अंदर। जैसे आपने कहा कि भई टाइम के साथ आपको आइडिया होता है कि स्कूल मिस करते हैं, फिर कॉलेज मिस करते हैं, फिर स्कूल कॉलेज मिस करते हैं, फिर जब आखिर में मतलब दुनिया को जस्ट लाइक प्रूव करना होता है अपनी एबिलिटीज़ से, तो फिर आपको बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो आपने स्कूल में नहीं सीखी होती। अच्छा, स्कूल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप किस तरह की स्टूडेंट थी? बहुत सारे बच्चे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, या कुछ बच्चे जो है ना अपने टीचर्स के बड़े वो हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा हमारा ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। इस तरह का आपकी लाइफ में स्कूलिंग के अंदर क्या-क्या हुआ? और स्पेशली गर्ल्स के अंदर तो ये कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा होता है। कहीं न कहीं आप रिग्रेट कर रही होंगी शायद, मगर मुझे ये लगता है कि गर्ल्स के अंदर जब गर्ल्स स्कूल में देखा गया है, तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं, और जहाँ कॉम्पिटिशन होता है वहाँ एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग भी नजर आते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपका स्कूलिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा? कोई टीचर्स, कोई आपकी स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ आपके कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह, कुछ इस हवाले से बताएं। ओके, सो उस हवाले से मैं हमेशा से बहुत नॉटी तो नहीं, बट मैं बहुत ही टॉकेटिव स्टूडेंट रही हूँ. स्टिल आई लव टू टॉक, एंड आई थिंक दैट actually made me into the field of marketing, because you have to talk a lot, and PR to be specific. मैं बहुत टॉकेटिव थी. हमेशा एक चैटर बॉक्स हिलाती थी. दैट वाज द बिगेस्ट कंप्लेंट जो मेरी हमेशा पीटीएम में आती थी टीचर्स के साथ, कि मरियम बहुत बातें करती है, मरियम बहुत बातें करती है, मरियम बहुत बातें करती है. बट मैं रिग्रेट नहीं करती उस चीज़ का. आई थिंक हर चीज़ का एक चार्म होता है, उसका भी एक चार्म था. आई मीन क्योंकि एज लॉन्ग एज मेरा वो स्किल, या कह लें कि मेरी वो एक चीज़, इट डिड नॉट मैटर मच इन टू माई स्टडीज़. आई मीन मैं कहीं पे भी फेल नहीं हुई बिकॉज ऑफ कि मैं बहुत बातें करती थी, मैं कंसंट्रेट नहीं करती थी या कुछ भी. सो आई थिंक आई डोंट रिग्रेट दैट, एंड आई एम ग्लैड माई पेरेंट्स डोंट रिग्रेट दैट ईदर. कंपटीशन के हवाले से, एंड मैं कितना ज़्यादा इन्वॉल्व थी इन चीज़ों में. सो कंपटीशन तो हर जगह होता है. इट्स नॉट के गर्ल्स स्कूल था तो कंपटीशन है, या बॉयज़ स्कूल था तो कंपटीशन है, या को स्कूल है तो कंपटीशन है. कंपटीशन हर जगह होता है, एंड आई थिंक कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर किसी के अंदर एक उम्मीद या एक जज्बा नहीं होगा कि ओ मुझे ये हासिल करना है, एंड नहीं ये मुझे हासिल करना है, उसको नहीं. कंपटीशन हमेशा फेयर होना चाहिए. आई वुड से कंपटीशन हमेशा से इक्वालिटी होनी चाहिए कंपटीशन में, कि आप सही तरीके से, सही पाथ के साथ, और सही सही नीयत के साथ एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एक मेडल हो, या चाहे वो अच्छा स्कोर हो, चाहे वो अच्छी परसेंटेज हो. एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, और आज भी कहती हूँ, बिकॉज ये मेरे साथ अभी भी होता है. मैं भागती किसी और चीज़ के पीछे हूँ, और कोई और चीज़ मेरे पीछे ज़रूर भागती है. आई ऑलवेज इन स्कूल वांटेड टू बी समबडी हु इज़ टूवर्ड्स इंग्लिश. मुझे हमेशा से इंग्लिश में हाई स्कोर चाहिए था. मुझे हमेशा से इंग्लिश डिबेट करनी थी, इंग्लिश लैंग्वेज करना था, कैंगरू जो मैथ्स कंपटीशन होता है वो करना था. मुझे हमेशा से स्पेलिंग बी में जाना था, एंड आई ऑलवेज यूज टू फेल इट. whenever I tried it, I always used to fail it. और उसी की जगह पे मैं जब उर्दू डिबेट करती थी, I used to win it. I have 10 certificates, all of first position and Urdu. I went on a national level debate competition, and that was also in Urdu. And I still remember एक उर्दू की डिबेट थी, उसमें अपनी ही स्कूल के बारे में बात करनी थी, और वो फेवर अगेंस्ट दोनों था. Unluckily or luckily, I don't know what to say, but मुझे against मिला, and I did it. And I still remember I was standing on the podium and I was talking, I was giving a debate, and I had the favorite person right standing next to me, who was my friend, who was my own friend, and we were talking, and suddenly our principal stood up, and she was like कि मैं नहीं चाहती कि आज इस अल्फाज के बाद मरियम ये डिबेट कंटिन्यू करे. एंड आई वाज लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंड. तो उन्होंने बोला आप अपने स्कूल की बुराई नहीं कर सकती.
मैंने बोला ये तो एक कंपटीशन है, ये तो एक डिबेट है. And I cried in front of the entire school. My teachers were there, my principal was there, my dean was there, because it was a competition. And later on I won that competition because I spoke correctly, and my teachers went to the principal and they confirmed कि ओ ये speech हमने confirm की थी, ये speech हमने ready करवाई थी, so इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मरियम ने हमसे छुपाई हो. So that is correct. Then I still remember जो मेरी last debate थी school में, that was also against one of my very closest friend, and I won that. Was my last debate in school, and मैं उसकी जगह जीती थी. And I saw her running away from the stage because she cried because वो उसका भी last था. So I think वो एक dream था कि मुझे ये जीतना है because मेरी last debate है, and she couldn't win it and I did it. So I think even today there are a lot of things. I never wanted to be a business person. My parents always wanted me to be a doctor. Of course सबके अम्मा अब्बा चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बने, मगर मुझे कभी कोई डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं था. So I think but I am here today. I mean I can't believe that I am here today. So I think जो चीज़ आपके पीछे होती है, जो आपकी डेस्टिनी में होता है, आपको वही मिलता है, नो मैटर आप किस चीज़ के पीछे भागें. सही. अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को भी मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे मतलब ऑब्जर्व करेंगे तो शायद हमें भी उसके लिए मोटिवेशन मिले कि जब भी आप किसी टारगेट या गोल के ऊपर काम करें तो बस अपना 100% दें और फिर कर गुजरें. अच्छा, जैसे स्कूल कंप्लीट हुआ, कॉलेज में आए, क्या चीज़ें थी जो स्कूल की मिस कर रहे थे और क्या चीज़ें थी जो कॉलेज से सीखने को मिली? ऑब्वियसली एक डिफरेंट शाफ्ट होता है, डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, एज टाइप भी डिफरेंट होती है, इवन मोड्स भी इंसान के डिफरेंट हो जाते हैं. तो इस हवाले से स्कूल की क्या चीज़ें मिस करते थे और कॉलेज में क्या-क्या सीखा? ओके, सो कॉलेज का पीरियड सबको पता है. मैंने इंटरमीडिएट किया था, ए लेवल्स नहीं किया. सो आई वेंट ऑन इंटरमीडिएट. आई वेंट टू आगा खान कॉलेज, एंड बिकॉज वो उस वक्त में दैट वाज द ओनली कॉलेज जो आगा खान बोर्ड ऑफर कर रहा था, बिकॉज मैं हबीब से थी और हबीब में आगा खान बोर्ड था, एंड आई डिडंट वांटेड टू स्विच टू सिंध बोर्ड और गो टू एनी अदर. आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन. सो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि मैं आगा खान जाऊँ. सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए आगा खान जाना ये था कि 10 साल की स्कूलिंग, व्हेन आई वाज लाइक 6 years old टू व्हेन आई बिकेम लाइक 14 years old, मैंने सिर्फ ऑल गर्ल्स में पढ़ा था. मुझे नहीं पता था कि लड़कों के साथ पढ़ना क्या होता है, लड़कों के साथ compete करना क्या होता है. there's a lot of difference, जेंडर में बहुत डिफरेंस है. no matter how much we stand today about gender equality, there will always be a difference in a man and a woman, and nobody in the world can change it because obviously Allah has created that. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि लड़कों के साथ कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोजेक्ट करना है, बिकॉज हमने कभी सीखा नहीं था. बट आई डोंट से कि होना चाहिए ये स्कूल में. इट्स ओके. आई मीन आई हैव बीन थ्रू इट. आई थिंक इट वाजंट मच अ डील ऑफ इट. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. देन वी ऑल नो कि कॉलेज बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, सिर्फ 2 साल गुजारने होते हैं आपने कॉलेज में, एंड उन 2 सालों में आपको सब कुछ करना पड़ता है. सो आई थिंक मेरा कॉलेज वाज वन ऑफ द मोस्ट सोशल कॉलेज. I don't still remember कि मैंने अपने कॉलेज में क्या पढ़ाई की है. The 2 years in college were fabulous. I would say my experience in Aga Khan was amazing. I made a lot of friends. I have a lot of good teachers from there. I was very, very, very social. अगर layman term में बोला जाए तो I partied a lot in my college, a lot. There were a lot of competitions in which we used to go. I still remember there was a time when LUMS used to have a business competition, because I always chose business because that was what I wanted to choose. So school में भी मैंने commerce choose किया था. Then of course college में मुझे commerce choose करना पड़ा because I never wanted to be a doctor, as I said earlier. तो LUMS में एक competition होता था जो अभी भी होता है, which is known as their Young Leaders Entrepreneurship, YLES, and twice every year we went, and not the first year we won, but the second year we did win, and I'm glad we won. It was a 9-day trip to Lahore, and I still remember first year में I was selected because I had the charm, maybe probably that's what my teachers thought, and they sent me. We did not win that year, so I was pretty much sad, and
आई न्यू कि मेरे पास एक चांस और है जो कि मैं अगले साल जा सकती हूँ. एंड नेक्स्ट ईयर अगेन वी वेंट with a group of 30 people together from the same college. सही. And the trip in itself was very fun because obviously 30 people going together for a 9-day trip was fun. The life at Lums was fun. The 9 days in Lums were amazing. In the end we won that competition, so that again was a charm. And again I would say the same thing, that you achieve what you want to achieve and you just have to dream for it. So सही. yeah. अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की कॉलेज के अंदर, मतलब जो गर्ल्स का माहौल, फिर अगेन एक लड़कों के साथ कम्पीट करना, और आपने एन्जॉय भी किया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया, फर्स्ट टाइम ट्रैवल भी किया लाहौर, आई थिंक इसी Yeah. तरह था. अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में स्पेशली ज़ैबिस्ट का इत्तेफाक कैसे हुआ, एंड स्पेसिफिकली पेरेंट्स का ख्वाब ख्याल था या आपकी सोच में भी डाला गया होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, एंड देन अगेन बीबीए? ओके, सो ऑफ कोर्स जब आप स्कूल से ही एक स्पेसिफिक फील्ड, स्पेशली व्हेन यू चूज कॉमर्स, तो आपकी फ्यूचर में जाते जाते आपकी जो चॉइसेस हैं वो लिमिट हो जाती हैं. अगर आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हो तो आपके पास इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स बचता है. अगर आप मेडिकल चूज करते हो देन यू कैन आइदर स्विच टू इंजीनियरिंग, वेरी रेयर बट यू कैन, या फिर आप कॉमर्स चूज करते हो. अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं स्कूल में देन यू ओनली हैव टू लिमिट टू कॉमर्स ओनली. सो अगेन मुझे पता था मुझे एमबीए करना है, मार्केट, आई जस्ट वांटेड टू डू एनीथिंग इन मार्केटिंग. बेसिकली आई वांटेड टू डू समथिंग इन फैशन, बट at that time I don't know, I mean I'm not sad about it or I don't regret it, but my parents were like, oh, fashion is not a degree to do, I mean do something which has a value. And today I see fashion में बहुत value है, जो भी है, but okay, I don't regret what I did not do. So I was like, okay, cool, it's okay if I can't do a degree in fashion, then I can choose my field to be in fashion. So for the 5 years and even today I have started my career with the fashion field and I'm still in the fashion field. So कहीं ना कहीं जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, if not that way so maybe this way. So I always believe in two things, which is destiny, जिसको हम नसीब कहते हैं, और दूसरी सेरेंडिपिटी, कि आपको किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ ज़रूर मिलती है जिस चीज़ का आपने ख्वाब देखा होता है, या जो चीज़ आपको बहुत ही सच्चे दिल से या अच्छी नीयत से और एक जायज़ तरीके से आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलती है. सो ये चीज़ मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एंड आई स्टिल बिलीव इट. तो ZABIST आना was again, सबकी पहली प्रेफरेंस IBA जाना होती है, and if you don't get a cut off in IBA then you have two good options, which is CBM and ZABIST. I did not wanted to go to CBM because of its location, and then ZABIST was the only choice that I could go to. Again, all my friends from college, which was 99% of the friends went to CBM. Even the friends I used to go with for all the admission tests and interviews, जिनके साथ हम 5 लड़कियां जो एक ही गाड़ी में बैठ के जाती थी कि वो आज यहाँ का इंटरव्यू साथ चलते थे ना, आज यहाँ का, all 4 of them went to CBM and it was only me who chose ZABIST. So ZABIST aake, and I still remember it was very, very funny because my parents came to drop me first day, first class. Tuesday को थी सुबह 8:30 बजे, and my parents came and they said कि हम घर जा रहे हैं, then we'll pick you up after 3 hours because आपकी class खत्म हो जाएगा. I was like, oh cool, no problem. And I was sitting at the reception waiting for my class, and suddenly I got to know कि oh पहली class थी cancel हो गई. And my parents went and I did not know what to do because first class थी, आप किसी को जानते ही नहीं है. I mean you see a lot of people, and then luckily a friend of mine, which was my class school girl, and I did not meet her in college of course, she and I bumped in together, and then I was like कि तुम यहाँ, and then I got to know oh she's in from the same class. So कहीं ना कहीं वो थोड़ा relief था कि oh चलो I met somebody at least. And then she was like कि class तो cancel हो गई. So I was like हाँ. And then the next class was in the evening. So and then बीच में 3 घंटे का gap भी था. Anyway, it was first day, so obviously couldn't do anything. So got back to home and then came back to ZABIST again शाम में.
So that was my first experience. And I really think कि वो दिन कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि obviously अगर हम नहीं गए थे, क्लास कैंसिल हो गई, तो हम रैगिंग से बच गए थे. So I think वो बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए कि हम रैगिंग से बच गए थे. So yeah. सही. That अच्छा, was my बहुत first सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर. आपने अंडर ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन के अंदर ही आपने अपने करियर का आगाज़ किया. करियर का आगाज़ करने से पहले एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है. क्या-क्या सब्जेक्ट्स थे जो आपने कहे कि आपकी शायद एस्थेटिक को उन्होंने हिला के रख दिया, आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद एनहांस करने के लिए उन सब्जेक्ट्स ने या उन टीचर्स ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया ज़ैबिस्ट में? क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि ठीक है, फाइनल ईयर के अंदर जस्ट लाइक अंडर ग्रेजुएशन के हम देखेंगे, इंटर्नशिप वगैरह करेंगे जब रिक्वायरमेंट आएगी डिग्री की. आपने इन बिटवीन में कुछ इस तरह का किया है, उस पे मैं बाद में आऊँगा, मगर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी रीज़निंग्स क्या थी? यहाँ का ज़ैबिस्ट का कल्चर, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के सब्जेक्ट किस तरह आपको अपने जस्ट लाइक इवॉल्व करने में हेल्प किया आपको उसने? Okay. अच्छा, so जब मैं ZABFM आई थी, it was 2014. And तब ZABFM बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा अभी है. It has changed, like I think 90% ZABFM change हो गया है. तब तो बिल्कुल भी campuses इतने अच्छे developed नहीं थे. Again, number of campuses उतने ही थे, या शायद अब एक दो ज़्यादा हो गए होंगे. But campus life was very difficult, because शुरू में was very difficult for us to understand कि कौन सी class कौन से campus में, and then running from one campus to other campus, it was tough. I think किसी course ने इतना ज़्यादा personality evolve नहीं की, but I would say one thing that जो बहुत अच्छी बात है यहाँ के टीचर्स की, ऑफ कोर्स आप दूसरी यूनिवर्सिटीज का नहीं कह सकते, बट यहाँ के टीचर्स की, दैट एवरी टीचर सिंस वी स्टार्टेड, व्हिच वाज आवर फाउंडेशन ईयर, till our graduation year, every single teacher has taught us to how to self groom ourselves. चाहे वो क्लास में आना हो, किसी अजीब posture में बैठना हो. I mean, a teacher has to do nothing with how you're sitting in the class, as long as you're sitting, listening to her or him, writing down your notes and answering the question. That's about it. टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओ आप अच्छी तरीके से नहीं बैठे हुए, ओ you're not self groomed, ओ you're not wearing proper clothes, especially to boys. लड़कियां तो पहन लेती थी. But again, I have seen all my teachers, I have seen this thing very well, कि every other teacher has taught us कि ओ आपको how you should sit in a class, how you should sit in a interview, because that actually helps us today. It actually does, because there are a lot of teachers and there are a lot of words that somewhere in your mind that retains. आपको कभी ना कभी याद रहता है कि ओ उस क्लास में उस टीचर ने ये जरूर कहा था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर लॉट ऑफ टीचर्स आर देयर जिनकी कोई ना कोई बात मुझे आज भी याद है. No matter if it's about my practical world, if it's about what I'm studying, or what am I doing in the class, if I'm not concentrating or talking to somebody or anything. So I think that was one of the best things that I loved about ZABIST, and I loved how teachers have always cooperated with us. There were times when teachers, I mean bachelor's के time में तो obviously none of us were doing any work, right? But teachers were. There were a lot of teachers who were visiting faculty, and they used to come from their workplaces. At that time we wouldn't understand कि यार teacher को तो शौक ही नहीं है पढ़ाने का. But today when we are working, we realize कि oh, it's not easy to do a 8-hour 9-hour shift at work and then come and teach students. It's not easy at all. So I think today I realized that fact again, and I appreciate all those teachers who have taught us in the evening classes from 6:30 to 9:30 after a 9-hour shift in their offices, their positions, a bad day in office, a good day in office, despite of having 100 meetings or whatever. So yeah. अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को वाकई रूटीन में फेस करनी पड़ती हैं, इवन चाहे गुड डे हो, बैड डे हो, मगर कराची की ट्रैफिक तो माशाल्लाह मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको कंज्यूम कर लेती है.
बिसाइड दिस बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में भी हुई, मगर एक चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे कहा कि आपको शुरू से एक माइंडसेट था कि यू शुड गो एंड परस्यू द फैशन इंडस्ट्री एंड लाइक दैट, बट यू हैड स्टार्ट विद द प्रोडक्शन, ग्लिट्स प्रोडक्शन से आपकी पहली इंटर्नशिप हुई। और उसके बाद जो आपका मैंने जब रिव्यू किया सीवी को, तो उसके अंदर डॉलर्स भी था, कहीं फैशन का दूर दूर तक नहीं है। एनीवेज, डॉलर्स के जो है प्रोडक्ट्स के लिए हम अक्वायर करते हैं मॉडल्स वगैरह, वहाँ पर एक फैशन लाइफ कहीं ना कहीं टच करती है, मगर टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री को वो दूर दूर तक नहीं है। तो बिटवीन द डिग्री, मतलब आपने 2 साल कंप्लीट किए थे शायद, और आपने इंटर्नशिप का प्रोसेस किया, ये कब ख्याल आया और इस तरफ किस तरह जाना हुआ? Okay, so I don't know, a lot of people might not know this, and a lot of people might know this also. Glitz was right next to ZABFM. Glitz was a very small setup. It was basically an event management company, and they used to do corporate events for big giants. And I just had opportunity to do a internship, and again it was right next to ZABFM, तो बहुत ही convenient था. It was literally walking distance. I think अब वहाँ पे कोई कैफे है, पहले ग्लिट्स होता था. So I did my first internship over there. Was an event management internship, and we did an event for Siemens. At that time, they had launched their one of the softwares for SAP, and again, it was a very short internship. So I wouldn't call it something very brief, but I got to learn. I got to make a lot of contacts and a lot of people that from the corporate world, basically, that I met over there. And I'm glad that I'm still friends with them. I'm still in contact with them. Then again, as I said, and I've been saying this since the start of this show, that you think something, and the life has something else planned for you. So my second actual internship was in Dolans, but it was in the department of HR. तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि ओ मैं मार्केटिंग करूंगी और मैं फैशन करूंगी, बट समवेयर इन द वर्ल्ड आई थिंक आई वुडंट से आई लॉस्ट होप इन माई सेल्फ, बट आई थिंक मैंने सोचा था कि ओ अच्छा ये फैशन तो मुझे नहीं मिलना, सो आई थिंक लेट्स जस्ट डू समथिंग एल्स. सबने मुझे कहा कि यू कैन बी अ गुड HR, सो लेट्स डू एन इंटर्नशिप इन HR. So my internship in HR in Dolans was very good. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी. अगेन there were lot of softwares. internship आप इतना काम नहीं करते, but I was glad. Still I'm glad कि मैंने वो वाली internship नहीं की जिसमें मुझे सिर्फ photocopy करनी थी चीज़ें या फिर data entry करनी थी. I actually learned a lot of things. उनका अभी भी होता है DFLP program, which is Dolans Future Leadership Program, which is basically their MTO program. And we designed that entire program, did a lot of screenings for people from GIK, from FAST, from NUST. There were a lot of people we recruited. Obviously, I did not travel because I was doing an internship. So people who traveled to execute that entire program, but I was a part of the entire management of that program. Again, there were a lot of other things, other policies that we made for Dolans, and I'm glad that these places I've always worked on intern in, I think I'm still friends with them. I mean, internship पे आप हार्डली अपने बॉसेस के साथ इतनी दोस्ती होती है कि ओ 6 or 7 years down you're still in contact with them, but I mean still अगर मुझे पास कोई जॉब में मुझे रेफरेंस चाहिए होता है, I call them and I take their permission कि ओ I want to put your name in the references, so may I, and they're so happy for that कि oh you still remember us. So I'm glad that it gave me that. Again, what I thought I did not get, and I still remember the day I got my first offer. I would specially thank ZABIST for this, because if I did not apply to that job and still studying in ZABIST, I think ZABIST was the only EDC department of ZABIST especially who gave my CV, I'm sure, to them. So I think the start of my career, I would always, all my life, I will owe ZABIST for this.
all credits goes to ZABFM for this. I still remember I was in my sociology class in the 8th of semester, and I got this call from Safinaz that we've offered you the position of MTO in the marketing department, and these will be the days and every detail, like whatever the offer has. This will be the package, benefits, days, work, what you have to do, what you don't have to do, and everything. And obviously जब शुरू होता है you just can't say yes, you have to consult so many people. आपको पता नहीं है कि कहाँ है क्या है. And I said okay, I will get back to you on this. And I went home, I spoke to my parents about it, कि मुझे ऐसे ऐसे offer आई है. And my parents have never said no to me for anything. They've never said no. They always said, and I still remember my अम्मी said कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पढ़ाई के साथ ये कर सकती हो तो हम मना नहीं करेंगे. सही. तुम्हारा फैसला है, कुछ तुम्हें करना है. And stepping into the world of work, it's not easy. And then being in your last semester, you have to see कि तुम्हारी CGP अच्छी रहे, you get your degree, you pass your exams, you have to communicate the same to your people at work. And I called them, I told them everything कि oh, these are the days that I have my classes. दोपहर में भी classes होती हैं, सुबह में भी classes होती हैं. And this is the time when I will have my exams, I have my assignments and everything. So these are the things जो मुझे आपके साथ communicate करनी है, and I don't want to hide anything from you guys. This was me to my employer at that time. And I don't know, I would say I was lucky enough, and I would say कि again मेरे नसीब में था. So they agreed to all my points. They agreed to giving me leaves when I have my exams. They agreed on giving me early offs or late ins when I had my classes early morning or in the evening. And then I completed my degree while working at Safinaz. Took a 6-month gap, and then we, all of our friends, we thought of doing masters also, same in marketing. I spoke to my manager about it, that I want to do my masters. He was so supportive. He said, of course, you should do it. I did my masters being in Safinaz, and I think I owe a lot to that organization because they've supported me all through my degree, my bachelor's degree, which was so important for me to be where I am today in my career. And even my master's degree, to my line manager, to my manager, to my CEO, each and every person supported me on doing that, because there were a lot of sacrifices that they had to do, despite of being an organization, a big organization, and but they always supported me for that. अच्छा, so, yeah. सना सफीनाज तक देखा है हमने, तो आपने प्योरली मार्केटिंग के अंदर काम किया है, और उसके बाद आप आ गई अलकरम के अंदर, तो वहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करने का इत्तेफाक हुआ. बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ ही इंसान अडॉप्ट भी करता है, लर्न भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है. मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का ये सफ़र किस तरह रहा, और सना सफीनाज से जब आप आगे बढ़े अलकरम का? ओके, सो सना सफीनाज में मैंने मार्केटिंग भी किया, मैंने थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी किया था, एंड लिटिल बिट, बट आई डिड डिजिटल मार्केटिंग एज वेल. Then Alkaram, when I went, it was all about social media and digital marketing. Again, वो एक different चीज़ थी. A lot of people said कि you should not leave Sana Safinaz at that moment. Even my own manager said the same. But I was like, no, I want to explore something new, and this is the time when I have to explore a lot of new things. So I think it was very difficult because पहली दफ़ा आपने काम तो कर लिया, वो आपका एक comfort level बन जाता है. मैंने 2 साल और 9 महीने वहाँ काम किया था, and I think I was so comfortable with that place, my managers, my colleagues, my friends. I was very anxious, I was very stressful कि now I have to join another organization. पता नहीं मेरे bosses कैसे होंगे, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे. वो location बहुत दूर थी from my house. But again, I would say कि अगर आपको कोई चीज़ achieve करनी है, so you have to leave your comfort level, you have to leave your comfort space. And I still want to achieve a lot of things, and I wanted to achieve that.
So I had to leave my comfort level and go to another organization. Al-Karam in itself was a very good company and still is. It's just that when you step into a lot of things, आप कभी कोई course भी लेते हैं, कोई subject भी लेते हैं, then you realize कि oh, I think this is not working for me. No matter how much I have studied, or no matter how much I am, I'm so forward in my career. I think मुझे अभी भी मैथ्स नहीं पसंद. कोई मुझसे बोलेगा ओ मैथ्स करें तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे मैथ्स नहीं अच्छी लगती. So similarly, you get into an organization and you just feel like, oh, I think this organization or the culture is not a good fit for me, and hence I think I can work on something better. I spent a very short time in Al-Karam, which was about 6 months only. And I think I don't regret leaving that place, because those 6 months, I mean, as a period, it was a very short period. But again, the friends I made over there, and now that they all of them are into different places, different organizations, working at different levels, successful in their own careers or on their personal lives everywhere. I think I'm still friends with all of them, and that's the best part, because you make connections when you get into practical world. I think apart from achieving a better position and a better experience, it is also important how well have you connected to your previous place, or how well have you connected to people from the previous place, because in life you never know when you're gonna cross paths with anybody. Indeed. And I mean, I think it's very important, because you get to learn a lot of different things about different cultures, about different organization, and helps you not to go to that place or to go to that place. So yeah. इनिशियली आपने जब सना सफीनाज के अंदर काम किया तो वो भी 2.5 ईयर तकरीबन, उसके बाद 6 महीने आपने काम किया अल-कलाम स्टूडियोज के अंदर. इनिशियली आपने मार्केटिंग और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरफ आपने काम किया, देन अगेन आप डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग की तरफ आए. अब आपको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इमेज के अंदर, और यहाँ पर आपका मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन का काम है. तो ये किस तरह, मतलब आपने तकरीबन ब्रांड मैनेजमेंट को छोड़ के मीडिया की तकरीबन सेल्स और ब्रांड मैनेजमेंट को छोड़ के तकरीबन सब चीज़ों में जा रहा है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? इमेज में भी मुझे 2 साल और 5-6 महीने तकरीबन हो गए हैं. एंड जब मैंने इमेज ज्वाइन किया था, वेल दिस इज समथिंग फनी दैट आई वुड वांट टू टेल, बिकॉज दिस, आई मीन, इफ यू पुट दिस इन एक्चुअली, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप कोई भी ये चीज़ सुनेगा तो उसको शुरू में ये बात मैंने कही थी जब ये स्टार्ट हुआ था सेशन, कि ये चीज़ मेरे साथ स्पेशली हुई है या सबके साथ होती है मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है. आप किसी चीज़ के पीछे भी भागते हैं और यू डोंट नो कि आपके नसीब में क्या चीज़ लिखी हुई है. जब मैंने अल-कलाम की ऑफ़र एक्सेप्ट की थी, राइट एट दैट टाइम आई हैड अ ऑफ़र फ्रॉम इमेज. I did not choose image because at that time I felt like, oh, image को तो कोई जानता ही नहीं है. I don't know image, what company is image. Again, image के सामने अल-कलाम, अगर आपके पास भी ऑप्शन आएगा, आप अल-कलाम ही चूज़ करेंगे. और मैंने अल-कलाम चूज़ किया. It did not work for me because it was never meant for me. Again, I applied to image and I got the offer from image and I went to image. आज मुझे 2 साल और 5-6 महीने हो गए image में, and I am so happy at image. It's one of the best organizations, I would say, in terms of growth, in terms of learning, because market में अल-कलाम और सना सफीनाज बहुत सालों से हैं, and they are a renowned brand. They do not have to do much struggle at this position now. I mean, हर कोई नया, they do come up with new concepts, new designs, everything new, but there are a lot of things that on which they don't have to work because they've been in the industry, they've been in, they have their loyalty, they have their credibility. जब मैंने इमेज ज्वाइन किया था, lot of people did not know image. इमेज की कोई अवेयरनेस नहीं थी, इमेज को लोग जानते नहीं थे. सो आई थिंक वो टाइम मेरा बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए भी एज अ करियर एंड फॉर द ब्रांड इटसेल्फ, बिकॉज टुडे आई कैन प्राउडली से कि मैंने 2.5 साल जो इमेज में काम किया है, आई हैव वर्कड इनफ टू मेक दैट ब्रांड नोन फॉर एवरीबडी, known for Karachi itself, but also all over Pakistan, all over the world. People know what image is.
लोगों ने इमेज के एड्स देखे हैं, लोगों ने इमेज के बिल बोर्ड्स देखे हैं, द अमाउंट ऑफ फुटफॉल वी यूज टू हैव 2 years पहले और 3-4 साल पहले versus the amount of footfall we have today. People know ke I have seen a lot of other people copying what Image has. Image was the pioneer of chicken curry, but today I see a lot of other brands copying the same thing. So somewhere I would say ke it has helped me and my career and like to achieve what I did. Apart from that, I think I can proudly say कि मैंने इमेज को अवेयरनेस दी है इतनी ज़्यादा कि लोगों को अब इमेज के बारे में पता है. So again, it wasn't something different that I have done at Image. जो मैं पिछले 3-4 साल से करती हुई आ रही थी, was समथिंग और समवेयर द सेम थिंग. इट्स जस्ट कि आप जब अपने करियर में आगे बढ़ते हो सो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होता जाता है. व्हेन यू जस्ट वर्किंग ऑन टू वन एलिमेंट, आप जब करियर में आगे जाते हैं तो भाव आपके उस एक एलिमेंट के साथ की जो चीज़ें होती हैं वो जुड़ती जाती हैं. मैंने स्टार्ट मार्केटिंग से किया, बट आई हैड मतलब एक मार्केटिंग एक एलिमेंट था, उसमें फिर डिजिटल मार्केटिंग आया, उसमें फिर कॉर्पोरेट मार्केटिंग आया. अब एट इमेज आई एम ऑल्सो डूइंग public relations. So public relations, textile में, fashion में, it's about all about fashion. So थोड़ा सा शायद public relations different होगा. It's not more towards networking, but it's more towards collaborating with influencers, collaborating with a lot of models or celebrities, because fashion है. So again वही वाली बात है कि career में जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, now at this position I think I know that I want to achieve something in marketing only. And वही बात है कि अभी मेरे पास 4 elements हैं, which is marketing, digital marketing, corporate marketing, and now public relations. Still there are a lot of other ways to explore, and मैं वो सब explore करना चाहती हूँ, as long as I want to and I can. I think I can do it, and yeah. सही. अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान टाइम के साथ ही सीखता है और हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है और टाइम देने के बाद ही पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अगर इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री या इस तरह की मार्केटिंग में अपना करियर परसू करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे भी गुजारिश की थी कि बिटवीन द डिग्री यानी कि सेकेंड ईयर में आप थे बीबीए के, तो आपने अपना इंटर्नशिप का प्रोसेस किया था. आज स्टूडेंट्स को आप क्या टिप देंगे, या आपके पास फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट की सीवी आती है तो आप स्टूडेंट की सीवी के अंदर क्या देखेंगे और इंटरव्यू के अंदर उस पोटेंशियल को किस तरह एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ यही राइट कैंडिडेट है जो आपके पास डिजर्व करता है. इस तरह कोई टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहें. Okay. So all the students, not only ZABIST, अगर ये ZABIST के अलावा भी कोई students देख रहे हो, so I wouldn't mind sharing this tip. CV is your first step to sell yourself. आपको किसी भी कंपनी में जाना है, आपको किसी को अपना स्किल सेट दिखाना है या किसी को आपको दिखाना है कि ओ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस या आई हैव द एबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, आपका फर्स्ट स्टेप होता है आपकी सीवी. आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगला बंदा इतना अट्रैक्ट हो कि वो आपको कॉल करे. बिकॉज आई स्टिल से कि जब तक आप किसी के साथ इंटरव्यू में नहीं बैठते, आप डिस्कशन में नहीं बैठते, आप किसी को भी ये चीज़ नहीं बता सकते कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकता हूँ. दैट यू कैन ओनली डू आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं, बिकॉज आप ही इंटरव्यू में एक डिटेल बात कर सकते हैं. मगर इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको सीवी दिखानी पड़ती है. अगर आप अपनी सीवी में कुछ लिखेंगे ही नहीं कि अच्छा आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम तो लिख दिए कि मैंने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, बट आपने काम क्या किया है ये तो आप बताएं. आपके पास स्किल्स क्या हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ तो मेरी तो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लग सकती, और यू कैन से मैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं जा सकता. बिकॉज वाई? क्योंकि मैंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, मैंने लम से नहीं पढ़ा हुआ, मैंने IBA से नहीं पढ़ा हुआ, मैंने आई एम टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं या जिनके अतराफ जो इन बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आई जस्ट वांट दोज पीपल टू स्पेयर लाइक 2 minutes ऑफ देयर लाइफ, go to LinkedIn, search people from these companies, search people from
Unilever, search people from P&G, search people from any big giants, search people from Engro. Um, you will find people of ZABIST, you will find people of ICRA, you will find people of Hamdard University. You will definitely find these people in these giants. तो फिर ये वाली बात सच कैसे हो सकती है? It's not such. It's just a stereotype, I would say. I mean, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई थी, but it's just a stereotype and it's not truth. What the truth is that how you sell yourself, how much are you capable and confident कि नहीं जो जहाँ से मैंने पढ़ा है, that university has its credibility, that university उस यूनिवर्सिटी ने मुझे जो बनाया, अब now I have to owe that university. Obviously, 6 years of my university life, whatever they've taught me, whatever, बस उन्होंने उनका काम खत्म हो गया पढ़ाने के बाद. Now it's my job to achieve everything that I want to achieve, and 10 years down, like 5 years down, if I'm sitting over here talking, I am talking about my university. I am proud that I was a part of ZABIST, because अगर हो सकता है मैं ZABIST में नहीं होती, मैं कहीं और होती तो मैं इतना अचीव नहीं कर पाती. Similarly, I think 15 years down even, अगर मैं wherever I want to be, wherever I will be, I will still say कि oh, I was part of ZABIST. So now is the time that you have to give back to ZABIST, give back to your organization, give back to your institute what they have taught you. So I think for all of that, it's important that apart from making a very good CV, attractive CV doesn't mean that, oh, you do a lot of colors in your CV or you do a lot of, funky elements in your CV. It's all about the content, because people will only read content. कि आप कितने ज़्यादा capable हैं किसी position के लिए. Then I think I would say that you should have confidence in your own self. You should have the power and strength to achieve something. If you are applying somewhere, do not lose hope. You don't get calls. I did not get calls. I did not get 100 calls maybe, but I got 10 calls. I won't say that I want कि अच्छा मैंने 100 जगह apply किया, so I want कि बाकी सारी 100 जगहें मुझे call भी करें. No, it doesn't happen. It never happens for anybody. No matter वो कितना ही ज़्यादा अच्छा इंसान हो, it doesn't happen. So always have this faith in yourself. There were times when I was applying for a job for a year. 1 साल तक मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ कि यार 1 साल से आप एक जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं and you don't get it, you do lose hope. That's natural. It's a human phenomena. You do lose hope. But again, you should have confidence in yourself कि okay, maybe something better is coming for me, or maybe I still have to learn something to go to that organization. And that actually happened with me. So if something can happen with me, I think it can happen with anybody, or maybe something else can happen with you. But you should always be confident with whatever you have or whatever you know, and always try to learn something new, whatever you like. It's not कि okay आपके parents को नहीं पसंद, but तुम्हें पसंद है, you should do it. And there will be one day when you will be able to prove your parents, prove the world कि ओ जो आपने कहा था देखें वो सच नहीं था. सही. It's just that what I wanted to do, because that's exactly what I do today. And I kid you not, my parents are not sad. My parents do not regret this thing कि ओ मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बन पाई. Like I mean वो उनका 10 साल पुराना ख्वाब था, and those 10 years I knew that I have to prove my parents के जो मैंने चूज किया है वो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि obviously नसीब अपनी जगह पे थी मगर मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी. So ठीक है, आप नहीं चाहते थे मैं फैशन डिग्री करूं, I did the degree that you wanted me to do and I chose the field that I want. So मैंने उनकी भी ख्वाहिश रखी, मैंने अपनी भी ख्वाहिश रखी, और मैं आज जो भी हूँ, जो भी अचीव कर रही हूँ, I think they're proud of me and I know this for a fact. So never be sad, never lose hope.
सही। ऑब्वियसली टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो आज हमारे अपने शो का टाइम अपने इख्तिताम पर पहुँचता है, बट इट वाज़ अ वेरी एनलाइटेंड डिस्कशन विद यू एंड हाइली थैंकफुल फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत अच्छी-सी चीज़ों से आपने हमें आगाह किया। बहुत सारी अच्छी टिप्स मिली कि आपको जो मुझे अभी भी यही कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अपनी सीवी पे अपनी स्किल्स को ज़रूर मेंशन करें, क्या एबिलिटीज़ हैं आपकी, क्या कर सकते हैं, वो ज़रूर मेंशन करें। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ ज़ैब एफएम डिजिटल।